एक बार फिर सोमवार सेशन, साल का रविवार सेशन, संडे सेशन, साल का पहला संडे सेशन, आप सबका स्वागत है. इट्स मेनली फॉर किड्स टुडे. तो व्हाट विल किड्स डू? व्हाट इज द, आपने देखा वो मैसेज? व्हाट वाज इट? इंटरैक्टिव सेशन. तो इंटरैक्टिव सेशन कैसे होगा? व्हाट डू यू डू फॉर इंटरैक्शन? You participate, share. Okay, fine. So that's what all of us will be doing here. Okay, even the elders will come if they want. We're not having any audio visual today. It's more of interaction. And let's start with something which is common to all the kids. You have under 10 years. How many kids? You can raise your hands. 10 and under. Okay. And then 11 to 15. Okay. 11 to 16. 16 and above. College going kids. I mean, yeah, that's what. इसीलिए criteria. Up to 25. 16 to those are not entered working life. ठीक है. So it's a mix. सबके common क्या चीज लेंगे अपन? Common topic to all of you and probably to all of us. We've discussed this so many times, but still it can be, the topic can be taken again, angle will be different. Okay. भैया लिखेंगे टॉपिक क्या? विल से मैजिकल लाइफ. ओके. व्हाट इज मैजिक? Yeah, children, what is magic? Anybody? First row, what is magic? Probably I'll give you 10-15 seconds to think, and then we'll ask each under 25 people to participate and tell what they understand by. Yeah. Red le lo. Okay. Yeah. Start from Mani. What is magic and what is life? What do you think? जोर से बैठे बैठे बोलना है, खड़े. Take the mic. Okay, start with you. What do you mean by magic? Magic देखा है आपने? मैजिक शो देखा है? क्या होता है उसमें? कैप के अंदर जोर से बोलो. कैप के अंदर स्टिक घुमाते तो बर्ड जाता. Okay, कैप के अंदर स्टिक घुमाते हैं तो बर्ड निकल जाती है. That's one magic, correct? और क्या क्या होता है? नहीं देखा है? Something different life में, unusual, different. Okay, something different, something unusual. Anybody else? Something different. Okay, something different. What else? Any magic show you remember? Meet remember something. Magic trick देखा था ना? नहीं देखा? किसी ने मैजिक ट्रिक नहीं देखी? अच्छा, बोलना नहीं चाह रहे. Kids here? Yeah. Something, any magic show. I'll leave the mic there. You have to say something. Something different. Different. Different, okay. What else? Magic is illusion. Illusion, okay. Right, anybody else? Okay, हमने क्या सुना? Magic is anything different. Illusion, something which is not there happens. Okay? वो कैप में बर्ड थी पहले? नहीं थी ना? फिर सडनली बर्ड आ गई, राइट? तो कहां से आई? उस कैप से बर्ड निकली, पहले नहीं दिखी, राइट? ओके. बर्ड एक्चुअल बर्ड होती है? होती है. कैप भी होती है, स्टिक भी होती है, लेकिन कैप के अंदर बर्ड नहीं थी. बस वही मैजिक हो गया ना. बर्ड, सडनली आप बर्ड देखते हो, इट इज मैजिक. बाहर एक क्रो उड़ रहा है, नहीं. बट कैप के अंदर आपको पहले नहीं दिखी और फिर बर्ड आ गई, दैट बिकम्स मैजिक. करेक्ट? ओके. सो व्हाट इज मैजिक? Suddenly something you don't anticipate or which does not look possible happens. Okay? And what do you mean by life? When I say life, what comes to your mind? Okay? Few seconds you think about it. Breakfast सबने नहीं किया ज़्यादा बराबर ना? Breakfast में क्या correction? Probably that will have a long discussion if I speak to the elders.
suggestion or correction. Okay, but we all had breakfast. Okay, energy, ready? चलो एक बार खड़े हो जाएंगे. See what happens? Group में चिल्लाना है, everybody is ready. माइक जब जाता है चुप हो जाता है. क्यों? क्लास में या कहीं भी जब सीखने का चांस रहता है, ऑलवेज पार्टिसिपेट, है ना? क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, उसका आंसर नहीं मिलेगा. सो वंस यू शेयर, वंस यू इंटरेक्ट, यू लर्न बेटर. करेक्ट? किसी ने गिटार कीबोर्ड सीखा है? ओके. वो सर ने वो नोट्स वगैरह दी थी ना? एनीथिंग, इट कैन बी गिटार, कीबोर्ड, एनीथिंग. सिर्फ नोट्स देखने से, पढ़ने से हुआ? किससे सीखे आप? By practicing. Okay. Okay, unless you do something, you will not learn fully. So that's why unless you participate, you will not learn fully. Now we'll start. भैया आगे आ जाइए. आप इधर आ जाओ. And what do you think if you had all the time? मतलब एक वो मैजिक स्टोरी देखा है ना, भगवान आते हैं या कोई देवी देवता आते हैं और बोलते हैं आपको जो चाहिए हो जाएगा. ऐसा देखा है ना बहुत सारी स्टोरी में. या वो कल्प वृक्ष होता है. ब्लैक मैजिक नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं, व्हाइट मैजिक है. ब्लैक मैजिक अलग होता है. इसमें अच्छा होता है वो व्हाइट मैजिक होता है. ठीक है ना? जो सोचने से हो जाता है, पूछने से, मांगने से मिल जाता है, दैट इज व्हाइट मैजिक. एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाइट मैजिक. ब्लैक मैजिक लोग बोलते हैं होता है, बट इफ यू आर स्ट्रांग, if you're praying to whatever god you're praying, if you're strong, then nothing happens to you. Okay, black magic doesn't work if you're strong. come just वहीं से बोल रहे भैया, लिख लीजिए. what would you like to do after 12th, after college, after later? कभी भी छोटे रहोगे तब भी आपने कुछ सोचा रहेगा. यू सेड आईएएस ऑफिसर एक बार ना, और ऐसा कुछ? सॉरी, सिंगर. यू वांट टू बी अ सिंगर. ओके, राइट. नेक्स्ट, सिट डाउन, सिट डाउन. बैठे बैठे भी बोल सकते हो. कर, टेल मी. चार्ट अकाउंटेंट. ओके. डांसर. ओके, डांसर. कोरियोग्राफर. ओके. सी, दिस इज वन लेवल ऑफ योर गोल्स. क्या आप कोई डांसर बनना चाहेगा, कोरियोग्राफर बनना चाहेगा? ओके. ये क्यों बनना चाहोगे आप? ओके, तो इससे आपको खुशी मिलेगी, इसलिए आप करना चाहोगे. एनीबडी एल्स? खुशी मिलके फिर क्या करना चाहोगे? अपन खुद सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद देश का अच्छा करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, सोसाइटी का अच्छा करेंगे. गुड. क्या करना चाहोगे बेटा? इंटीरियर डिजाइनिंग. इंटीरियर डिजाइनर. ओके. यस. Dancer. Okay. Performer. What kind of performer? Okay, stage performer. Footballer. Okay. So there are different goals that you have. You want to do this, you want to do that. शुरू से ये गोल था कि चेंज होता गया? कुछ कभी चेंज होता गया, कई सालों से सेम है. Okay. Not yet decided. Cricketer. I'll come back to you. Those are not decided. Decide something. Automobile engineer. Okay, cricketer, automobile engineer. What happens is, if you're not decided, no problem. You can have some goal. अभी बैठे बैठे you think of something. You can always change. Permanent नहीं है यहाँ, right? अभी permanent नहीं है, so you can always change. Cricketer. Police commissioner. Cricketer, police commissioner. What will you do? Police commissioner बन के? पापा ही बोलते हैं. ओ, पापा बोलते हैं इसलिए. अच्छा, अभी ये पापा जो बोलते हैं वो नहीं बोलना है, आपको क्या लगता है वो बोलना है. ओके? फैशन डिजाइनर. So I'll come back to Pari after some time. परी को क्या बनना है वो बताएगी. क्रिकेटर. क्रिकेटर. बॉलर, बैट्समैन. ओके. डांसर. Dancer. Okay. You say and then you pass. आर्किटेक्ट. Architect. Okay. आर्टिस्ट. Artist. What artist? Painter, sculptor. पेंटर. Okay. इंजीनियर. Engineer. Okay. I want to research Research. What field? physics. Okay. चार्ट अकाउंटर. Chart accountant.
Fashion designer. A lot of different things: poet, businessman, astronaut. Okay. How many years you've been thinking about this? 2 years? Okay, anybody more than 3 years? 1 year? Last 1 year? 8 years back you've been, 8 years back? How old are you now? From your first standard? Okay. Ambition that I want to become an artist, musical artist. What are you doing now on that field? Playing keyboard now in schools, functions and all. Good. A big round of applause for. What? You can introduce yourself to your friend. I'm Chirayu, In what standard? What school? 8th standard, Sindhi Model Senior Secondary School. Good. So Chirayu from his first standard has been thinking about keyboard and he's playing keyboard and now he's in 8th and he's stuck to that goal. So he's been able to learn a lot. Now he plays in schools and lots of other places. Okay? A lot of you also had goals. So what is the difference? Once you're on the same, you keep practicing the same thing, you get better. Okay, so he's been able to do, find some growth in whatever goal he had because he's been able to stick to that. Okay? Secondly, so one thing, if you need to reach your goal, one thing you need to be very clear about it, and then what do you need to do? What do you need to do? Yes, only the kids. What was Chirayu doing? First standard, second standard, third standard, he was practicing. Okay. So practice is very important. Maybe we'll take another. Yeah. Okay. How many of you think your goal is difficult to achieve? Okay. Only 1%. Everybody else thinks it's easy. 2 of you think it's difficult. Anybody else? You think it's difficult? Okay. Right. What is the difficulty there? You can shout out from your place. Yes, चिल्लाया था ना जोर से, उतनी जोर से चिल्लाना. Why do you think it's difficult? नहीं वहाँ पर जैसे म्यूजिशियन बनना है, एक्टर बनना है तो कोई स्कोप नहीं. अगर मेरे साथ कोई और मेरे साथ रहता है, मेरा कोई दोस्त ऑलरेडी है, उसके सपोर्ट से मैं जा सकता हूँ. ऐसा पर मेरे कोई नहीं है उसके. Okay. स्कोप नहीं है, सपोर्ट नहीं है. म्यूजिशियन अकेला नहीं बन सकता, टीम चाहिए, वो नहीं है. और दूसरा, म्यूजिशियन का इतना स्कोप नहीं है. ओके, फ्यूचर नहीं है. क्यों डिफिकल्ट क्यों है? Not study, but I feel it's difficult. Like Why is it difficult? अच्छा, दिमाग में सेट हो गया कि डिफिकल्ट है. ओके. Like I wanted to do research, so for research you need to first know जो भी है वो पूरा जानना पड़ता है. उसके बाद कुछ नया भी सोचने के लिए you need a lot of patience and you बाद में अगर change करने का मन हुआ तो you can't change because you have to be consistent. Yeah, here. Somebody said difficult here. Easy? Poet बना easy है? Difficult है. क्यों difficult है? You need to, put aside a lot of time for that. And once you sit for doing your poetry and all, then you should be, satisfied with all the things and you should make people satisfied with what you are writing and all that. You need to involve a lot of time for that. Okay. It's difficult because writing some song notes, it takes art. We have to. It's difficult because you have to even match even a single tune. It differs. How difficult it was to write the song in your 5th standard? 7th. I write my songs. No, but the first time. Now I feel okay. It's manageable. It's easier now, right? Okay. What's the easiest, the people who said difficult, what's the easiest thing for you? What's very easy? Yeah? How many of you think walking is easy or difficult? Walking just like this. Easy? Okay, how many of you know swimming?
इजी, अभी इजी जो कई साल से कर रहे हो तो ओके. हाउ मेनी थिंक स्टैंडिंग इज इजी? स्टैंडिंग इन वन प्लेस. ओके. We'll have an extended session. हाँ अभी तो just आपको एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है. All of you would have seen this video, most of you. No arms, no legs. He has no arms, no legs. Stand करने के लिए you have to practice a lot. Just एक idea है, you don't have to listen. Okay, देखा आपने? You saw the person, no? No arms, no legs. Okay. What he's saying is, you saw him, very difficult to even stand. Okay. But then, at one point of time, he says, जब वो 8 साल का था, when he was 8 years old, he always used to think, I have no arms, no legs, no arms, no legs. यही thought चलता रहता. कई बार आप सोचते हो जो नहीं रहता उसके बारे में सोचते हैं अपन कि मैं अगर if you want to be a say poet, you see a poet who writes well and you think you want to be that, right? Or sometimes you see somebody doing very good in maths, very good at maths, and you feel maybe I should have, मेरा brain थोड़ा अलग होता था, I would have done maths easier. Yeah? Okay? So lot of time we do that. We have certain qualities, but everybody doesn't have all the qualities. So we tend to think of what we don't have. Okay, so that's what he's saying. For many years he was thinking, I have no arms, no legs. Thinking से arms और legs आएगी? नहीं आएगी, right? कई बार रोड में अपन देखते हैं ना, somebody is begging, no arms, no legs. So a lot of people they end up doing that. Arms, legs नहीं है, they beg, people put money as one way. What this man decided, after some years समझ में आया कि मैं ये सोचने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है. Arms, legs नहीं है तो नहीं है. Once you decide that okay, ऐसा है, ये अपने को समझ में आ जाता है कि ऐसा तो है. अब क्या? What next? When you think of that, then you see the solution. Okay? Unless you think of what next, if you keep thinking of the problem, there is no solution. Correct? So then he decided to angle. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's a lie to think that you're not good enough. Just in a few seconds, you see him swimming, doing all that which is not possible without arms and legs. Okay? But once he decided, I have to take the next step, it became possible.
First you have a problem, you have a goal, you have a challenge, and then you decide that you want to, once you decide you want to overcome the problem or the challenge, then things start happening, okay? Possible? Whatever you think, if it's possible for such a person, can we do something? If you decide to do something? Possible, right? Okay. But somebody wants to play cricket. Cricketers कौन थे यहाँ पे? Budding cricketers? Okay. Who else? What class are you in? 4th standard. 2nd standard, okay. 2nd standard, okay, fine. So Tendulkar started playing when he was 4 years. Okay, और सुबह 4:30 बजे से उठ के प्रैक्टिस करना, खेलना, वो सब होता था, इतने साल तक किया, so he could do it. So if you want to play cricket also, it's hard work. Okay, everything is going to be very difficult, but if you want to do it, you can do it. Okay? Clear? So you'll have practice, you will have hard work, you will have failures. उसमें देखा था, I don't know, we saw that he falls down and then he gets up, right? You saw in the video, na? देखा? इसमें नहीं दिखा, okay. Probably the whole video will see that. So without arms and legs, getting up, can you imagine that? अभी अपन गिर जाते हैं, कैसे उठेंगे? हाथ रख के उठेंगे ना? तो बिना हाथ और पाँव के उठना बहुत difficult. But with practice, what you'll do? धीर, come, you want to? Okay. Just एक मिनट आओ. हाथ पाँव नहीं रहेगा तो कैसे उठोगे, गिरोगे तो? ये बोला ना? हाथ पैर नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ से उठना पड़ेगा. यहाँ से? चेस्ट से. हाथ कोई भी चीज उठना है तो एट द एंड ऑफ द बॉडी विल गेट अप. हाथ एक एंड या पाँव एक एंड, कोई भी एक एंड के सपोर्ट से उठोगे. हाथ पाँव नहीं रहते हैं तो हाउ ही गेट्स अप? सर लगा के पूरा फोर्स, बहुत प्रैक्टिस लगेगा, बट यू फाइंड सॉल्यूशंस. ओके, सो फेलियर विल बी देयर, देन अगेन हार्ड वर्क, प्रैक्टिस. आपने प्रैक्टिस किया, बहुत हार्ड वर्क किया, फिर फेल हो गए. व्हाट इज द सॉल्यूशन? फिर प्रैक्टिस, फिर हार्ड वर्क, फिर मे बी फेलियर, मे बी सक्सेस. फेलियर हो तो फिर वापस वो एंड देन फाइनली यू विल हैव सक्सेस. ओके, ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? ओके, नाउ फॉर मे बी 30 seconds or so, आप सोचो कि आपको फाइनली यही गोल रखना है, कुछ और करना है. ओके, बच्चे लोग जो भी सोचे थे, you want to change your goal? Are you prepared to do all this? All the practice, all the hard work, and then this? Yes? People who thought hard, you want to still do the same thing? Okay. Here? You want to do the same thing? Okay. So there are two options. Once we say, yeah. Pilot. Okay. Either you change the goal, first thing, or you say, no, I really didn't want to do that. You know, I can do something else. Okay? वो जैसे वो सोर ग्रेप्स वाली स्टोरी सुनिए ना. एक लोमड़ी जाती है, अंगूर दिखते हैं, उसको बोलते हैं अरे बहुत उसका मन होता है खाने का. एक बार कूदती है, 2 बार कूदती है, फिर अंगूर नहीं मिलते हैं, तो क्या बोलती है? अंगूर खट्टे, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं था, दूसरा अंगूर चाहिए. तो या तो अपन वो बोलेंगे, या बोलेंगे नहीं अंगूर नहीं, एप्पल खा लेते हैं. एप्पल अगर इजीली मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ठीक है. और अपन बोलेंगे नहीं मेरे को तो अंगूर ही चाहिए, बट वी विल नॉट मेक द एफर्ट टू रीच फॉर इट. ओके, सो विल से अंगूर ही चाहिए, फिर 2 साल हो गए, फिर 4 साल हो गए, फिर क्या चाहिए, तो यू कैन से एटलीस्ट एक सर्टेनिटी रहती है कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस, बट वी मे नॉट मेक द एफर्ट टू डू दैट. हैपेंस? ओके,
So all three things are fine, and nobody will mind. Okay, because all these families will have a decent education. कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो बैठे हैं सब बच्चे कर लेंगे. Okay, कुछ ना कुछ कर लेंगे. You will make some कुछ business या कुछ job कुछ हो जाएगा. But जो करना था आपको वो जब तक नहीं करेंगे तब तक पूरी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. राइट? पोएम, लास्ट टाइम व्हेन यू रोट अ पोएम. Okay, 2 years back. And how did you feel? Very good. Okay. And when you wrote the poem, you are into a job or a business? You are studying. So did you study well that time? So normally what happens, if you do something you like, even the other things you do well. Okay. So one thing we'll need to do is automobile engineer or cricketer or whatever you think of. थोड़ा प्रैक्टिस करके मालूम पड़ेगा ये करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू चेंज द गोल, फाइन. बट अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू डू दैट, यू विल नॉट नो वेदर यू रियली वांट टू डू दैट. ओके, इट्स सेम फॉर मैथ्स, साइंस, एनीथिंग दैट यू डिसाइड. सब चीज के लिए वही कॉमन है कि जब तक आप करेंगे नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इसमें अच्छे हैं, इसमें आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहीं ट्यूशन लेनी है या और कुछ और कहीं से सीडी से सीखना है, कुछ करना है. करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ले सकेंगे. अनलेस यू वॉक टुवर्ड्स दैट यू विल नॉट नो. ओके, वन. सेकेंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. यू सॉ इन दैट वीडियो, राइट? वो कौन सा मूवी था? 3 इडियट्स में था क्या? पेस्ट निकाल दिया, बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो पेस्ट निकाल दिया, वापस नहीं डाल सकते हैं. यू सॉ दैट सीन, राइट? ध्यान है? बट स्टिल दैट इज पॉसिबल, क्योंकि शुरू में पेस्ट बना तो डाले ही थे ना, वो ट्यूब में तो भरा हुआ ही है ना पेस्ट. पॉसिबल है, लेकिन डू यू वांट टू डू ऑल दैट मेहनत, ऑल दैट रिसर्च टू डू दैट? ठीक है, आपके लिए वो वर्थ है कि नहीं है? थिंग्स विल बी पॉसिबल. ओके, नाउ द एल्डर किड्स, व्हाट आर द अदर चैलेंजेस दैट कम इन? करने में और क्या प्रॉब्लम आता है? सपोर्ट, और यू सेड नो, यू ट्राइड सम टाइम बैंड बनाने का, कुछ करने का? बहुत बार. कुछ प्रॉब्लम, जैसे कोई राह रेडी नहीं होता कोई करने के लिए, उसको वो चाहिए तो ये करना बस. कई बार ट्राई किया तो सक्सीड नहीं हुआ. क्यों? कि जो दूसरे लोग करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, जिद पे अड़ गए. वो लोग बोले नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे वगैरह. ओके, एनीबॉडी एल्स? रिसर्च इज टू. There's so many things I don't know. I just leave it. It says I don't know so much. There's no point. मतलब every time I try to read something out of the textbook, I come across so many things that are new to me. और लगता है इतना ही नहीं पता है तो where will I start? मैं Yes, anybody else? पोएट में तो क्या प्रॉब्लम है? Where do you face a problem writing a poem? 2 साल के बाद वापस पोएम क्यों नहीं आई? Tried many times after that, but वो छोटी छोटी poems बना के. Basically the problem comes when you can't rhyme things properly, and what is the message you want to pass it on, whether that is clear or not. So you should make sure about First it. poem that you wrote 2 years back, that poem No. which you're happy about. Not the Yeah. poem. Okay. So what was different then? What happened that made it easy? Oh, how I was able to. Basically, What I was. happened when 2 years back the poem happened very easily and it came out very nice. So what was different then? I was very free of. I mean, my mindset was really free. I could have thought. Poem लिखने के बारे में मैं सोच सका उस वक्त, and I just did that, and it came flawless. Yeah, as अभी it is. क्या different होता है? So basically, life goes on and you become busy, and the effort from your side decreases. Basically, I won't say the people around you don't support you. It's your support which you need for yourself that comes down. So he's saying effort कम हो जाता है अपनी तरफ से तो रिजल्ट नहीं आता है. मे बी, बट कई बार पोएम में तो एफर्ट की बात नहीं होती रहेगी. पोएम में तो आपका रिलैक्स रहना ज़्यादा जरूरी है, एफर्टलेसनेस की ज़्यादा जरूरत रहेगी. सो प्रॉब्ली यू या मूड और इमेजिनेशन भी ज़्यादा मैटर करता है. मूड और इमेजिनेशन वगैरह. सो बट व्हाट यू कैन डू इज एनीबडी जो भी अपने अच्छा किया है, जब आपने पहले अच्छा किया ना, कुछ भी अच्छा म्यूजिक बजाया, अच्छे से पढ़े हो,
अच्छे, जब you had one session of good study, so what was different there? If you try to understand, then you can do the same thing again. One. Number two, इसका जो point था कि people don't support and all that. Okay? So ये अपन ने पहले भी देखा है. यहाँ आप हो, ओके, यहाँ आपसे जुड़े हुए लोग हैं इस सर्कल में, आपके फ्रेंड, मम्मी पापा, ओके, जो आपकी बात सुनेंगे. मम्मी पापा हर चीज में आपकी बात नहीं सुनेंगे, बट कुछ चीजों में आपकी बात सुनते हैं. तो जहां भी आपका इन्फ्लुएंस है, आप बोलेंगे वो कोई सुनेगा. जो चीज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, आप हो और एक सर्कल है आपके आजू बाजू जिसमें आप वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ठीक है, अच्छा पढ़ाई आपके हाथ में है, पढ़ाई आपके हाथ में ही नहीं है, आप पढ़ सकते हो, राइट, उसमें कोई रोक नहीं सकता. अगर आप पढ़ने चाहोगे कोई रोकेगा? सो दैट इज इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, आप जो कुछ करना चाहो या किसी से करवाना चाहो और हो जाए, वो ये सर्कल में है. इसके बाहर सर्कल ऑफ कंसर्न. इंडिया मैच हार जाती है, आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कर सकते हो आप उसके बारे में? नहीं कर सकते ना. तो ऐसी सब चीजें यहां पे हैं. ठीक है, आपका दोस्त जिद करता है, आप बोलते हो ऐसा आजा बैंड बनाते हैं, वो सुनता नहीं है, नहीं सुनता है, तो यहां पे है कि यहां पे है? सर्कल ऑफ कंसर्न में. लेकिन वही दोस्त आपकी कौन सी बात सुनता है? कोई और बात सुनता है? क्या बात सुनता है? बाहर जाना हो तो आ जाएगा. अच्छा, बाहर कहीं घूमने जाना है तो आ जाता है. तो वही दोस्त कुछ चीज़ों में यहाँ पे है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कुछ चीज़ों में आप उसको नहीं कर सकते हो. तो वही दोस्त लेकिन यहाँ पे है, सर्कल ऑफ कंसर्न. ओके, और इसके बाहर कई सारी चीज़ें हैं जिससे अपने को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आपके दोस्त का कोई और दोस्त है जो आप नहीं जानते हो, वो कुछ करेगा नहीं करेगा, वो आप उससे आपको कुछ मतलब है? आपको जानते ही नहीं आप उसको, सो इट डजंट मैटर. ओके, तो ये सब चीजें यहां आ जाती है. इसके बाहर तो जब दोस्त नहीं सुनता है, अपन क्या करते हैं? पहले तो फोर्स करते हैं, फिर अगर नहीं मानना है तो छोड़ दे, कहीं और दोस्त से पूछ लेते. तो कई बार अपन फोर्स करते हैं, राइट. फोर्स करने में क्या होता है? टाइम लगता है, 10 मिनट 5 मिनट, कितनी देर फोर्स करते हो? नहीं, एक्चुअली जो भी उसके बारे में अच्छा होता है वो सब बोल देते हैं कि उसको बटर लगा देते हैं. अच्छा, बटर करते हैं. बटर कितनी जल्दी हो जाता है, कितनी देर लगती है? वो दोस्त के ऊपर निर्भर करे वो मानेगा कि नहीं. वो दोस्त पे डिपेंड करता है कितना बटर लगवाता है. ठीक है, तो कई चीज करते हो आप, उसमें क्या होता है? टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, राइट. और नहीं मानता है तो क्या होता है? तो दोस्ती थोड़ी सी कम हो जाती है, सेम रहती है. ठीक है, ओके. तो कुछ कुछ अपन करते हैं, बट इट डजंट मैटर. एक बार आपको मालूम पड़ गया, वापस ट्राई किया अपन ने? वापस नहीं गया. मतलब ही क्या ट्राई करके, जो वो पहले नहीं माना दूसरे टाइम. जब पहले ही नहीं माना तो क्या मतलब, उसको छोड़ो. ओके, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. अगर कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ के अपन दूसरा काम करते हैं. दूसरे दोस्त को मनाया, मान गया, ही वॉज इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, अब कई बार यहां पे जो भी अपन काम करते हैं, काम होता है. क्यों होता है? क्योंकि अपने इन्फ्लुएंस में है. ठीक है, यहां जो भी अपने इन्फ्लुएंस में है वो काम करेंगे तो वो काम होगा कि नहीं होगा? होगा. अपना एफर्ट कम रहेगा तो कम होगा, अपन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा. लेकिन ये अपने हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है. ओके, क्या क्या नहीं है अपने हाथ में? क्या चीज आपको खराब लगती है? क्या क्या चीजों से मूड ऑफ होता है? हाँ, कैन यू से दैट? क्या मूड ऑफ होता है? मम्मी लोगों को बोलना है, वो भी बोल सकते हैं. मम्मी लोग जानते हैं, बच्चे लोग क्या बोर होते हैं. बहुत मतलब इट्स वेरी वेग. मेरे को मूड ऑफ होता था व्हेन यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मेरे को हिस्ट्री से बहुत, ब्रिटिशर्स पे बहुत गुस्सा आता है, मुगल्स पे गुस्सा आता है. There's nothing I can do about it. I mean, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन we were the richest country in the world. Why isn't it that way? आता है मूड ऑफ. Anybody else? ठीक है ना.
ब्रिटिशर्स पे गुस्सा आता है, ऐसे क्यों करके चले गए, और अभी अगर नहीं आते, मुगल्स नहीं आते, ब्रिटिशर नहीं आते, तो सोने की चिड़िया और अपनी कंट्री ये होती, राइट? हाउ मेनी आवर्स यू थॉट अबाउट इट? लॉट ऑफ टाइम, यू डोंट नो। इतने साल से कई बार जब भी दिमाग में आता है वो चलता रहता है। और कुछ होता है ऐसे? यस दीपन बॉब। कई चीज होती है, अपन सोचेंगे ना कि अगर अपने टाइम निकल गया सोचते सोचते और काम नहीं हुआ, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। कंसर्न, ओके, उससे क्या होता है? 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में अगर 4-5 घंटा इसमें निकला सोचते हुए, कोई दोस्त कट्टी हो गया, लड़ाई हो गई, माना नहीं या मनाया, वो टाइम गया। सो ऑल दिस इज हियर। इंडिया मैच हार गई तो कितना देर उसके बारे में सोचते हैं? हु इज क्रिकेटर्स, किसको बहुत पसंद है क्रिकेट देखना? ओके, सो हाउ लॉन्ग यू फील बैड आफ्टर दे यू सी द मैच विच यू हैव लॉस्ट? हाफ अ डे। एनीबडी एल्स? 1-2 घंटा, हाफ अ डे। और पॉलिटिक्स में तो आप देखते हैं ना, कई दिन निकल जाते हो बात करते हुए, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए अलग बात है, क्यों हुआ। सो लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी गॉन। अगर यहां लगा तो फिर क्या हुआ? यहां पे अपना काम कम हो जाता है, राइट? यहां पे कम होता है तो फिर क्या होता है? कई चीजें जो हम कर सकते हैं आज, वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाती है। इफ यू डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज, द टीचर लिसन्स टू यू, राइट? कभी आपने होमवर्क नहीं किया, यू टेल द टीचर आई डू इट टुमारो, मानेगी मैम। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, शी लिसन्स। बट मार्क्स कम होते जाते हैं तो क्या होता है? आज वो टीचर यहाँ पे मान रही थी, लेकिन ये छोटा होने के बाद अब वो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर होगी, क्योंकि मार्क्स कम हो गए। नाउ शी डजंट लिसन, करेक्ट? यू से दैट मैम ये होमवर्क नहीं हो, ये तो हमेशा ऐसे ही तुम्हारा एक्सक्यूज हो गया, करेक्ट? इफ यू डोंट डू इट 2-3 टाइम्स, देन ये आपका छोटा हो गया इन्फ्लुएंस। धीरे धीरे टीचर नहीं, फिर कोई फ्रेंड जो बात मानता है वो नहीं मानता है, इट स्टार्ट्स going smaller, okay? So what our next thing we can do is, whatever we do all this, ये ध्यान में रखेंगे कि अपने हाथ में है कि नहीं है। पढ़ना अपने हाथ में है, राइट? प्रैक्टिस करना अपने हाथ में है। जो भी अपने हाथ में है अपन करें। मम्मी कई बार क्या चीज नहीं सुनती है, क्या बात नहीं सुनती मम्मी पापा? बहुत देर तक आईपैड करना और समथिंग, बहुत देर तक। बहुत देर तक आईपैड पे रहो तो नहीं सुनते हैं, दे डोंट लाइक। एनीबडी एल्स? सब बात सुनती है मम्मी, क्या बात नहीं सुनती है? कुछ तो सुनती है, कुछ नहीं सुनती है। क्या नहीं सुनती? मम्मी लोग क्या नहीं सुनते हैं बच्चों की बात? आप लोग बता दो, क्या बातें नहीं सुनेंगे आप? ज़्यादा टीवी देखते हैं तो नहीं सुनते हैं। टीवी देखेंगे नहीं सुनेंगे, आईपैड बहुत दे रहेंगे। हाँ, ओके। सेल फोन, मोबाइल, आईपैड, फोन, टीवी, उसके अलावा कुछ? ये एक चीज हो गया, राइट? बिग प्रॉब्लम। बच्चे लोग मानते हैं? ओके। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि आप लोग नहीं सुनते, वो बात मानते हैं। दे एग्री विद दैट, राइट? सो मम्मी क्यों नहीं मानती? Why do you think mommy doesn't listen to? You don't know. Okay. मम्मी नहीं आई है ना? ओके। आप लोग क्यों नहीं चाहते हो कि टीवी देखें? आप बोलिएगा। दुनिया में और कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. वाई वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस गैजेट्स एंड गेटिंग लेजी, यू नो, दे कैन गो आउट, प्ले एंड ऑल दिस स्टफ. बाहर जाना भी अच्छा है, बट थोड़ा तो सेल फोन यूज़ करना चाहिए ना. अच्छा, आपका बोलना है कि सेल फोन के अलावा बाहर भी जाओ, चीजें सीखोगे आप. आपका बोलना है कि थोड़ा तो करना चाहिए. थोड़े का मतलब इस पे सेल फोन पे भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं ना. तो थोड़े सेल फोन का मतलब क्या होता है? अगर ज़्यादा बोलोगी तो फिर मम्मी वो भी काम कराती.
नहीं अभी यहाँ जो बोलेंगे उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, मम्मी प्रॉमिस आप प्रॉमिस कर दें, इसके कारण नहीं रोक सकते हैं लेकिन इसके कारण नहीं रोकेंगे। नहीं कम ही अच्छा है क्योंकि फिर हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है ना साइड इफेक्ट्स। That's mommy's saying. और क्या प्रॉब्लम होता है सेलफोन पे? रेडिएशंस होता है सेलफोन से। और कितनी देर रहते हो आप सेलफोन पे? 1.5 hour। फुल डे 1.5 hour। एंड उसके अलावा टीवी? अगर सेलफोन में ज़्यादा टाइम है तो टीवी नहीं दिखती। टोटल 1.5 hour। 1.5 hour is okay। कुछ भी कर सकते हो, कोई एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आप पढ़ना चाहो, जहाँ करना चाहो आप कर सकोगे, तो आप क्या करें? फॉरेनर्स इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सब लोग बस इंडिया 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 में रहता है, इंडिया इतना पॉपुलर हो जाता है। You think of one person who's done that? Indian? जो फॉरेन वाले किसने किया है जो सब invention, any good inventor abroad? Apple, you like Apple products or you like any engineering product? What product do you like? No. Any engineering product, what will you make? Okay. आप जब पढ़ाई करते थे क्या अपॉर्चुनिटी होती थी? Opportunities in those days were different, you know, taking like I passed in 98. So that cell phone was not there, TV was also there. So TV was not there, cell phone was not there. And so many distractions were there. Right. Only big distraction was there from their family. Bharat Bhaiya, you want to add something to family discussion? I don't have an idea what to add in what angle. No, whatever angle. I would say that दो व्यू पॉइंट्स है, सेल फोन बहुत ज्यादा कम है, डॉक्टर सेज तो ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा gadgets जो है is definitely an distraction, वो तो सही बात है, बट रिलैक्स करने के लिए बच्चे और उसको थोड़ी देर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट लिमिट में रहे तो अच्छा है। 3-4 आवर्स ही उनको मिलते हैं स्क्रीन के बाद में और कोई उसी में चले जाए तो फिर वेस्ट। दिस इज ऑन दैट किड्स के लिए एज ए पेरेंट मैं ये बोलूँगा कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे डू व्हाट दे लाइक टू, वो बहुत जरूरी है कि अगर वो जॉब करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ, तो उनको एक्सपोज करना चाहिए हर चीज़, सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, और इतनी आसानी से चूज़ भी नहीं होगा, बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है जिसमें स्कोप बनाना पड़ता है। सिंगर है तो यू हैव टू मेक योर ओन स्किल, इट्स नॉट इजी, अनलेस यू हैव अल्टीमेट सॉल्यूशन तो है नहीं। आई मीन दे हैव टू डिसाइड, इफ दे डिसाइड रॉन्ग दे विल बी नॉट दैट हैप्पी, दे डिसाइड राइट दे विल बी हैप्पी। What father said, if you decide right you'll be happy, if you decide wrong you'll be unhappy. When will they know they've decided right or wrong? When will you know whether you decided right or wrong? सेलफोन ज़्यादा यूज़ किया पापा के हिसाब से, मम्मी के हिसाब से, you are losing the time. When will you know whether it was right or wrong? After the lot of years will pass, तब मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम था, आंख खराब हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा, ओके, फिर क्या करोगे? ठीक है, व्हाट शी इज सेइंग इज फिर कुछ नहीं कर सकते, करना तो अभी करना है, राइट? यू अंडरस्टैंड नो क्यों मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको, आप कहाँ पे हो, लाइक इफ इट्स लाइक दिस लाइफ, अगर ये स्केल बना लो ईयर्स का, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30, 35, 40, like that. You are somewhere here, 5 years, 10 years. Okay? ये वाली हाइट के बच्चों को कितना दिखेगा?
5 years वाले को एक लेवल तक आप देख पाओगे. When you're 10 years, you'll see some more. जो 5 साल के बच्चे को समझता है उससे ज़्यादा आप समझोगे. आपसे जो 5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा समझ में आएगा. क्यों आएगा? Why do you think a older person will know better than you? That person will be having 5 years more experience than me. That person will have 5 years experience more than me. Okay. So that will help them to know better. How will experience help? That person may be having the problems which I am going to face. Yeah, you want to add something? Not just having the problem, they would have seen so many people with those problems. Yeah. It's like they probably made the same mistake and they know what not to do because it's Good. That is experience. So, okay, ये बात पे अपन agreed हैं then that with experience you are able to understand things better. Clear? Sure. Okay, any doubts on that? Experience teaches them, not just their experience, the people they hear, they see, all that adds up. No, it's not एक छोटा सा बॉल है और एक जैसे ये एक साइज का बॉल समझ लो और एक ये आयरन बॉल. ये एक आयरन बॉल है, ये एक साइज का आयरन बॉल है, ये एक आयरन साइज का बॉल है. It's not just the size, that छोटा सा increase in size gives a lot of increase in weight. Correct? Something like that. Experience also is like that. One more year of experience gives, it's not just 1 year, it's 1 year of your experience and then 1 year you interact with so many people, their experience. So the total amount of experience is more than 1 year. Clear? तो इसीलिए जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, they'll know more. And second thing, are they concerned about you? Probably you just close your eyes for 15-20 seconds. Okay? सब बच्चे लोग और everybody also. We just close our eyes and breathe very slowly and deeply. बहुत आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए. बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत पीस, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं. आंखें बंद हैं लेकिन आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो 4 कौन लोग हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे? 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, 4 people will always be with you, no matter what problem you face. Whenever you feel relaxed, you can open your eyes. Okay? So what people came to mind? Yeah. Anybody else? It'll be the family. Correct? All of us got that? You got the family members in mind, right? Okay. So one thing is they have more experience. Second thing is they have concern for you. They will always be there to support you. Correct? No doubt about that, right? समझ में आया ना? तो अब हो सकता है उनका जजमेंट रॉन्ग हो, स्मॉल चांस, बट आपका जजमेंट रॉन्ग हो और उनका जजमेंट रॉन्ग हो, चांस क्या ज़्यादा है? यू थिंक सेल फोन इज गुड, दे थिंक सेल फोन इज बैड. Who is more likely to be right? Parents are more likely to be right. Sure. Yes, Mitu ji. Anybody else? और भी कुछ आंसर आ सकता है ना? नहीं? मम्मी कट नहीं करेगी. You can be whatever comes to mind. You can say. Right? But it's clear. अगर अपन सोचे ना तो बहुत clear समझ में आता है कि family will always be with you, no matter what. तो गलत तो आपको बोलेंगे नहीं जान करके. जजमेंट रॉन्ग हो सकता है, बट जजमेंट अपना भी रॉन्ग हो सकता है, उनका भी रॉन्ग हो सकता है. अपना रॉन्ग होने का ज़्यादा चांस है. एजुकेशन में यू मे नो बेटर. आज कौन सी फील्ड में, कौन से कॉलेज में, कहाँ एजुकेशन, कहाँ एडमिशन का चांस है, दैट यू मे नो बेटर. दैट्स व्हाई दे विल आल्सो टेल यू दैट आस्क योर टीचर्स, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, दैट दे नो दैट यू मे नो बेटर. Not directly because your teachers may know better, your friends would have tried the same colleges and all that.
So that is a different aspect. But in चीज़ों में they're concerned about you, they want to help you out, and they get worried because बाद में, as you said, nothing can be done. आंख खराब हो गई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, है ना. टाइम निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. जो पढ़ना था अभी नहीं पढ़ा आपने, स्कूल 12th में सफ़र करोगे या कॉलेज में, तब कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज what Bhaiya was saying there, no, in his college, it's too late. Things are happening so fast. If he wants to write a poem which he likes, even for that he's not able to find time. You're getting the point? Later, there's lot of things happening. It's so many things happening at so fast of speed that you'll not have time to correct. Okay, तो जो सीखना है अभी सीखना पड़ेगा. बाद में सोचेंगे ये भी सीख लेंगे. जो 9th का पोर्शन अपन कॉलेज में वापस कर सकते हैं, थियोरेटिकली यस, बट टाइम नहीं रहेगा. ओके, अल्फ़ाबेट भी सीख सकते हैं 12th के बाद, ABCD भी सीख सकते हैं, बट ABCD सीखेंगे तभी दूसरी चीज़ें जल्दी इजी समझ पाएंगे. तो 9th का सीखेंगे तभी 10th का जल्दी समझ में आएगा. इट लाइक दैट. तो जो तब करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? Because you want to be an engineer. If somebody says, I don't want to do anything, I am prepared to, suffer, मेरे को सब बुद्धू बोलें, सब बोलें ये कोई काम की नहीं है, कोई काम का नहीं है. If you're happy with that, fine. But since you want to do well, that's why parents are also concerned. Correct? We all got the point? Okay, so can we clap for each other now? Because you understood the point. Clear, na? So you are there, you have a life, and you have some dream, you have some goal. Okay? Clear? Life है, dream है, goal है. और वहाँ कैसे पहुँचना है? It's all this. Practice करेंगे, अपना टाइम इन चीज़ों पे ज़्यादा लगाएंगे तो easy हो जाएगा. ये आप समझ जाएंगे, समझ गए हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? जब सेल फोन हाथ में रहता है और वो मैसेजेस आ रहे हैं, तब you'll remember this? No. You may not. Okay, you're very sure. नहीं. क्यों ऐसा होता है? Yes. Why does it happen then? The TV program will not help us. This message will not help you, but then you are stuck. होता है? क्यों? See, mommy understand. The child wants to just rest. What else? Okay. Okay, it's the easier way out. When you have two choices, दोनों में समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथ्स पढ़ें कि बायोलॉजी पढ़ें, तो तब तक आईपैड कर लेते हैं. अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, ये करना है वो करना है, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के लिए. It's easy. It's always easy also, right? फोन ऑपरेट करना, आईपैड ऑपरेट करना इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है. मैथ्स not that easy. I mean, for everybody it will be a different subject. If you don't like a subject, it's not that easy. Okay? But then, if you don't do the subject, if you don't study it, will it become easier or difficult? Clear? Meet is very clear. नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना. So simple. जीजू लोग को समझ में नहीं आ रहा. एक बार खड़े होके बता दो चेयर पे. अगर कोई काम डिफिकल्ट है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिफिकल्ट. और डिफिकल्ट हो जाएगा. क्यों? इट्स सिंपल. ये तो समझने की बात. ओके, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? इवन द किड्स आर एबल, बट व्हेन ही बिकम्स when he is 10 years or 12 years old and he has the iPad in hand, then somebody else will have to tell him. और 4-5 साल का बच्चा समझा पाएगा. But there is no way out. It's like this. ये iPad is something, I mean, it's all here. Your concern, it's a time pass वाली जो चीज़ें होती है ना, you can talk about why India lost the match. You're not doing anything to help Indian team win the match. Similarly, all these things, iPad वगैरह जो भी खेलोगे, as uncle was saying, as auntie was saying, for a change, for relaxation, fine. But why does iPad relax? TV program से relaxation क्यों आता है?
I think the husbands will be very clear. TV program अच्छा है कि नहीं है? But the ladies. I love to see movies, but I don't see TV. Okay, so you're saying for your daughter. You're relaxed. You're not thinking about what is stressing you. When you're on the phone or iPad, अभी next week exam है, tension बढ़ेगा, iPad पर रहोगे तो you forget that. Or it can be anything. कोई argument हुआ है, कुछ हुआ है, if you're on iPad and the phone, you are cut off. Okay, so that's helping you, you think. But does it help you? Does it help you manage the stress better? So we know all the answers. Okay. Now we'll come to how to implement it later. छोटा बच्चा रहता है ना, what happens? सामने अगर से बिल्ली आएगी या whatever he is afraid of, what he'll do? Run तो possible है, अगर भाग नहीं सकता है. Shout, आवाज भी नहीं निकलती है. आंख बंद कर लेंगे, करेक्ट? भाग सकोगे तो भागोगे, और पास में आ गया चिल्ला भी नहीं सक रहे हो तो फर्स्ट रिएक्शन आंख बंद कर लोगे. क्यों करेंगे? जो चीज डरा रही है उसको देखना नहीं है. ऐसे बहुत छोटे से वो साइकोलॉजी है. The same thing is happening here also. So stress, anything, you prefer to close your eyes to that, prefer to close our mind to that, and this is a form of that. Computer game या जो भी है, it's a form of doing that, but it is not going to help you, correct? Only thing that will help you is if you attack the problem.